to introduce them. Thank you so much. Hello, everybody. Give me a minute while I put my phone off. So it's a great pleasure to be here today with my old friend Uday Prakash, who I have known and admired for so many years, and who was here in the same hall in, I think, 2009, or when was it? And turn off. Uday Prakash is, for those of you who are still coming in, let's get everybody in. Hello friends, there's a lot of place in the front, whoever wants to come in. ये आज का सेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, क्योंकि ये हिंदी में लिखते हैं और ये अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं. ये हैं उदय प्रकाश जी, ये हैं जेसन. As I said, this is a bilingual session. It is both in English and in Hindi, because Uday Prakash ji is one of the foremost writers in Hindi at the moment. And Jason is his dedicated and brilliant translator and also a great writer in his own thing. Now let me formally introduce. This book, The Walls of Delhi, has been shortlisted for the DSC Prize for South Asian Literature, the prize for which will be announced this evening. Uday Prakash is one of contemporary India's most important voices. He has published several volumes of poetry and fiction over the past 25 years. He's a freelance writer and a journalist. He's also a filmmaker of documentaries, feature films, and television series. And he's also a playwright. And he'll tell us all about that later. He divides his time between New Delhi and Sitapur in Madhya Pradesh. So he has a rural and urban existence, and these rural-urban dichotomies are well expressed in his very stark fiction. Jason Grunebaum has worked as an interpreter and a delegate for the International Committee of the Red Cross in Kashmir, Kosovo, and East Timor. His short stories and translations have appeared in many journals, and he's a senior lecturer in Hindi in the University of Chicago, where he teaches creative writing. So Hindi will have to be patient with English, English will have to be patient with Hindi. If I could, and this is, at the same, little later, there's a session going on called Hindi, English, Bhai Bhai. So I'd really love to get a breakup. How many here are first Hindi speakers? Hands up. And how many are first English speakers? Wonderful. So, and some of you are confused because you're both, which is wonderful. So both hands up. Actually, both hands up for those who speak English and Hindi. Oh, wow. We live in a multilingual. That's wonderful. That's the joy of the session. So, जयपुर के प्रिय साहित्यकार सहृदय, कुछ 4 साल पहले मैं इसी खूबसूरत दरबार हॉल में उदय प्रकाश जी के साथ ये साहित्य उत्सव में वार्तालाप कर रही थी. उन्होंने एक अद्भुत सुंदर कहानी पढ़ी, जो सुनाते सुनाते वो खुद आंसुओं में फूट गए. और मुझे अभी भी याद है, उस कहानी का शीर्षक था नेल कटर. याद है आपको? और ये रोने लगे, इनके साथ हमारी ऑडियंस भी रोने लगी, सब सिसकने लगे. तो उदय प्रकाश जी की कहानियाँ बहुत मार्मिक भी हैं और बहुत डिस्टर्बिंग भी हैं. वो हर जानी पहचानी चीज़ को अनजाना बना देते हैं. इस साल उनकी नई पुस्तक वॉल्स ऑफ दिल्ली साउथ एशियन DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है. हाँ, कहाँ है? So the publisher is here also, and I'm delighted about that. And Jason will introduce the publisher as he speaks. And ये उदय प्रकाश जी हिंदी में पढ़ेंगे और उसका अनुवाद जेसन अंग्रेजी में पढ़ेंगे. So in this bilingual session, I welcome the extraordinary Hindi writer Uday Prakash and his brilliant and dedicated translator Jason. And Uday Prakash's narrative is tight, taut, and contemporary. He has been a friend of many years. I've admired both his intense style and his unblinking sensibility.
he makes no concessions. So we have a set of parallel readings, Uday ji in Hindi, Jason in English. Uday ji, आप पहले अपनी हिंदी में पढ़िए और फिर आप अंग्रेजी में पढ़िए. Coronation Park first. ये मेरी एक कहानी है जिसका शीर्षक है दिल्ली की दीवार, और यही प्रकाशित हुई है ऑस्ट्रेलिया से, यूनिवर्सिटी यूनाइटेड प्रेस से, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूनाइटेड प्रेस से, और वही है आज शॉर्ट लिस्ट में, वॉल्स ऑफ दिल्ली, जिसका अनुवाद किया है जेसन ग्रोनबाम ने, आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं उसका एक हिस्सा पढ़ता हूँ। ये दिल्ली के बारे में है। उसके शीर्षक से ही अंदाज़ा लग जाता है कि वॉल्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की दीवार। तो दिल्ली के बारे में ही है एक छोटा सा हिस्सा। अगर आप दिल्ली में हैं और कोई ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें अक्सर रात भर नींद नहीं आती और आप अचानक 3 या 4 बजे उठकर सड़कों पर यूं ही भटकने लगते हैं, तो आपने कभी न कभी किंग्सवे कैंप से राजघाट की ओर जाने वाली सड़क का दृश्य जरूर देखा होगा। किंग्सवे कैंप का नाम अब बदलकर विजयनगर कर दिया गया है। अगर आप विजयनगर चौराहे से अंदर की ओर निरंकारी कॉलोनी या मुखर्जी नगर जाने वाली सड़क पर चलें तो धीरे धीरे उस उजाड़ सी जगह तक पहुंच जाएंगे जिसे कोरोनेशन पार्क के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब उसे एक बड़े खूबसूरत पार्क में बदल दिया गया है, लेकिन यही वह जगह है जिसके आधार पर यह इलाका किंग्सवे कैंप के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब जॉर्ज पंचम या जॉर्ज या चार्ल्स पता नहीं कौन हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ के देशी रियासतों के राजा रजवाड़ों के कैंप इसी जगह पर लगे थे। वे विलायत के अपने सम्राट का स्वागत करने यहाँ इकट्ठा हुए थे। कहते हैं कि यह स्वागत सब कुछ वैसा ही था जैसा भी कुछ साल पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का स्वागत था। इसी जगह पर देशी रियासतों के राजा रजवाड़ों ने अपने अंग्रेज सम्राट का राज्याभिषेक किया था, जिसे अंग्रेजी में कोरोनेशन कहते हैं। और विलायती सम्राट ने यहाँ जो भाषण दिया था, उनके जाने के बाद उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार में रख दिया गया था। भाषण की उस प्रति को हिंदुस्तान के इतिहास का एक अहम दस्तावेज माना जाता है। इसके अलावा सम्राट की एक मूर्ति इंडिया गेट के बीचों बीच एक खूबसूरत छतरी के नीचे खड़ी कर दी गई थी। बाद में जब 1947 में अंग्रेज इंग्लैंड लौट गए तो वह मूर्ति अंग्रेज हुक्मरानों की दूसरी तमाम मूर्तियों के साथ इसी किंग्सवे कैंप के कोरोनेशन पार्क में रख दी गई। आज़ादी के बाद के सालों में यह पार्क धीरे धीरे भिखमंगों, पागलों, कोढ़ियों, लूले लंगड़ों, नशेड़ियों और लावारिस अनागरिक मनुष्यों की आवारा आबादी का अड्डा बन गया। चूल्हा, चक्की, घन, हथौड़ा, सिलबट्टा और पता नहीं किन किन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन लोगों ने सम्राट समेत सारे हुक्मरानों की मूर्तियों के अंग भंग कर डाले। कोई सम्राट का सिर तोड़कर ले गया, कोई हाथ, कोई पैर। बाकी मूर्तियां भी अब सिर्फ डरावने धड़ों के रूप में यहाँ वहाँ ज़मीन पर बेतरतीब उगी जंगली घास और झाड़ियों के बीच बिखरी पड़ी हुई थीं। रात घिरते ही समूची दिल्ली के कोने कोने से ऐसे लोगों की आबादी इस पार्क में सिमट आती थी और जगह जगह बिखरी इन्हीं खंडित मूर्तियों के बीच सोकर रात गुजारती। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप दिल्ली में हैं और एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें अक्सर आशंकाओं की कोई अंतहीन डरावनी फिल्म सारी रात आपके दिमाग के भीतर चलती रहती है और किसी बेचैनी और बदहवासी में घिरकर आधी रात या बिल्कुल तड़के आप वहाँ की सड़कों पर बेमकसद भटकने लगते हैं, तो आपने किंग्सवे कैंप के कोरोनेशन पार्क से निकलकर धीरे धीरे माल रोड पर राजघाट की ओर रेंगते मनुष्यों के उस अपार झुंड को जरूर देखा होगा। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह मिटा नहीं होता। सुबह का कोहरा दृश्य में एक धुंधला रहस्य भरता रहता है और आप देखते हैं कि फेलिनी या एंटोनियोनी की किसी फिल्म के किसी सुररियलिस्ट शॉट की तरह टूटे फूटे, विकलांग, अपाहिज, क्षत विक्षत, आधे अधूरे मनुष्यों का विशाल झुंड राजधानी की ओर चुपचाप बढ़ रहा है। लगता है पिछली सदी के किसी महायुद्ध में किसी शहर पर हुई भयावह बमबारी के बाद जीवित बचे घायल और विकलांग लोगों की आबादी उस संहार के मलबे से निकलकर किसी सुरक्षित जीवन की
शरण की ओर बढ़ रही है, किसी अंतिम शरण की ओर। यहाँ से रेंगते हुए सूरज के निकलते निकलते समूची राजधानी के कोने कोने में बिखर जाते हैं। उन्हें आप स्टेशन, बस अड्डे से लेकर दरगाहों, मंदिरों और शहर के हर चौराहों और पटरियों पर देख सकते हैं। यह आबादी झुग्गियों में रहने वाली आबादी से बिल्कुल अलग है और उसकी जनसंख्या आज़ादी के बाद लगातार बढ़ती ही चली गई है। संजय चौरसिया के पान वाले ठेले के पास के नुक्कड़ पर कभी कभार रंगीन कागज़ के फूल और हवा में घूमने वाली फिरकियाँ बेचने वाली कानी और सफ़ेद कोट से भरी चित्तेदार चेहरे वाली रुपना मंडल भी किंग्सवे कैंप के उसी कोरोनेशन पार्क से आती है। उसके साथ साथ कभी कभी आने वाला बिना बाहों वाला 7-8 साल का बच्चा सोहना भी उसी अनधिकृत आबादी का हिस्सा है। It's all right. My throat is I want to tell what. Thank you. Just very small part is left. तो देखा ना आपने कि कैसे संजय चौरसिया के पान के ठेले वाले नुक्कड़ से जो सुरंग शुरू होती है वह बाईपास के खंडहर से होती हुई किंग्सवे कैंप और फिर वहाँ से समूची राजधानी के कोने कोने तक विस्तृत हो जाती है। अगर आप इस सुरंग में दाखिल हो जाएं और चुपचाप चलते चले जाएं तो आप पाएंगे कि सुरंग ज़मीन के भीतर भीतर पूरे मुल्क और समुद्र के भीतर भीतर से गुजरती हुई समूची दुनिया तक फैलती चली जा रही है। यह एक अलग प्रकार का ग्लोबलाइजेशन है जो इतने अदृश्य और गोपनीय तरीके से हो रहा है कि इसके बारे में कोई समाजशास्त्री अभी ज़्यादा नहीं जानता। जो जानते हैं वे चुप रहते हैं और आने वाले समय का चुपचाप इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सुरंग की शुरुआत संजय चौरसिया की जिस दुकान से होती है वह दुकान मेरे फ्लैट से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। बिल्कुल मुमकिन है कि आप अपने फ्लैट या अलग थलग बने किसी मकान से निकलकर किसी ऐसे ही ठेले या रेहड़ी के पास के जमघट को गौर से देखें तो इस सुरंग का कोई न कोई मुहाना आपको भी ज़रूर मिल जाएगा। So I request Jason to read the similar passage. Thank you. Thank you, Namita. Thank you very much for your introduction, and thank all of you for coming this morning, especially to our publisher, Terry Ann White, who's come from Perth, Australia. So this is a brief passage from a story called The Walls of Delhi, which is the title story of the volume, The Walls of Delhi. And this is the passage that Uday just read. If you're in Delhi, and you're the kind of person who doesn't sleep very well at night, and at 3 or 4 in the morning, you're up, and you leave the house to go wandering around, then you've surely seen the road that goes towards Rajghat from Kingsway Camp, now called Vijaynagar. If you head towards Nirankari Colony or Mukherjee Nagar from the crossing at Vijaynagar, you'll find yourself in a desolate place that's known as Coronation Park. Even though they've turned the place into a big, beautiful park, it's the spot that gave the area the name of Kingsway Camp. They say that during the time of the British, when George V or Charles came here, I don't know which one, all the Indian kings and queens of all the princely states set up camp right there, gathering as one in order to warmly welcome their imperial king. They say that it was a little like the reception that Bill Clinton got when he visited. The kings and rulers of the princely states performed a crowning ceremony, or the coronation of their English king. The speech that the King of England gave has been stored in the National Archives, and the copy of this speech is considered a very important document in the history of India. On top of that, the King of England had a statue of himself installed slap bang in the center of India Gate under a lovely canopy. After the British returned to England in 1947, that statue, along with others dating from British rule, were uprooted, collected, and relegated to Coronation Park at Kingsway Camp. In the years after independence, the park became a magnet for loonies, beggars, the disabled, lepers, the maimed, druggies, and other wandering, unsettled individuals. They mutilated the statues, turning them into stoves, grindstones, sledgehammers, and using them in all sorts of creative ways. A king's head was severed,
a hand was taken, a leg removed. The torsos of the other statues lie scattered on the ground in a frightening, limbless state, surrounded by tall grass and shrubs. As soon as the sun sets, the special inhabitants of this park converge from each and every corner of Delhi and pass the night among the felled, ruined figures. So, as I was saying, if you're in Delhi and things are such that an endless nightmare loops in your head all night long, and in a fit of restlessness and depression, you go out wandering in the middle of the night or right before daybreak, then you've seen them, the mass of human beings skulking out of Coronation Park, Kingsway Camp, loping towards Rajghat on Mall Road. The dark of the night hasn't fully dissipated, and dawn is still a hazy mystery, while you watch a great mass of broken, maimed, crippled, halfway human beings, like characters from a Fellini or Antonioni film, as they quietly pass into the capital. They're like a group of survivors of a devastating bombing campaign from some 20th century war who picked themselves out of the rubble in the city that was the scene of the carnage and carry their wounded bodies to a place of refuge in search of a final protector. After the sun comes out, you see them everywhere in the capital, at the train station, at bus stands, in temples, at holy sites, at intersections, on sidewalks. These are not the slum dwellers. They form their own constituency, and one that's only gotten bigger since independence. In the corner of the neighborhood where Sanjay's is, sometimes you'll also see one-eyed Rupna Mandal, whose face is dotted with white spots from vitiligo, selling colorful paper flowers and pinwheels. She too journeys from Coronation Park. Sometimes Sona, a 9-year-old with no arms, another of the dispossessed, also comes along. You see how this tunnel that starts from the little corner of the street that's home to Sanjay's pawn stall leads to the bypass ruins, from there to Kingsway Camp, and from there extends to each and every corner of the capital. Enter the tunnel, quietly make your way deeper and deeper, and you'll soon discover that the tunnel traverses the entire length of the country. Then it continues below the ocean floor until finally it circumnavigates the entire subterranean earth. This is a different kind of globalization, one so stealthy and so secret that not a single sociologist in the whole wide world knows a thing about it. Those who do know keep quiet, stay put, and wait until tomorrow. But the important thing to remember is this: the tunnel originates mere steps from my home. Walk outside your home and take a good look at the little crowd that hangs out at the shop or stall or handcart, and who knows, you might find out where the tunnel comes out. Thank you. So one of the defining qualities of a book is how it comes through from the tunnel of another language. And it's wonderful that it reads so intensely in Hindi and in English. You have captured the same rhythm and tension again. So I was going to have a little bit of a conversation now with Udayji and with you. So I have a request to make of school children in the future. Choose which session you come into, and your teachers also, because it's extremely disrupting to have people come in and out. You can leave now. It happens with school children. उदय प्रकाश जी, आपकी कहानियाँ एक तरह से काफ़ी डिप्रेसिंग मानी जा सकती हैं। मैं उनमें आशा की किरण कम ही देखती हूँ। एक बार मेरी माँ ने आपकी एक कहानी पढ़ी थी, भूल गई हूँ कौन सी, और वो पढ़ते पढ़ते पुस्तक उन्होंने रख दी। उन्होंने कहा ऐसी किताब पढ़ूंगी तो मैं सुसाइड कर दूँगी। और उनको किताब बहुत पसंद आई, मगर उन्होंने कहा मैं पढ़ नहीं सकती हूँ इस किताब को। तो ये निराशा, ये पीड़ा कहाँ से आती है? And I'll repeat the question. You can please repeat the question in English and reply for him in Hindi for those who want to. So Namita was saying, I read a lot of your stories and they're very depressing. I don't see very many rays of hope at all. I remember reading one of your stories which I liked very much, but I
kept wanting to put it down because it was just so difficult and so depressing, and I sort of felt that even though I love your stories, if I read too many of them, I might actually consider committing suicide. So I'd like to know a little bit about the source of this pain and the suffering, and if you could talk a little bit about this. मैं हिंदी में बताऊँ? हाँ, आप हिंदी में बताइए, अंग्रेजी में बताएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ऐसा नहीं है। बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही आशावादी हैं, और जैसे पीली छतरी वाली लड़की, मुझे लगता है कि वो शुरू से अंत तक लगातार प्रेम। और हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा लेखक होता है, ये बहुत पहले कहा गया है कि वो शायद समाज के उस जगह पर होता है, उस बिंदु पर होता है जहाँ जितने सारे सोशल प्रेशर्स हैं, सामाजिक दबाव हैं, वो उसको इंटरसेक्ट करते हैं। और ये माना जाता है कि लेखक अंततः, मैं मानता हूँ, मैंने तो कहा भी है कि लेखक अपनी भाषा का आदिवासी होता है, वो दलित होता है, क्योंकि उसके पास कोई सत्ता नहीं होती, वो कोई मंत्री नहीं होता है, कोई अफसर नहीं होता है, कोई प्रीचर नहीं होता है जो आजकल बहुत देखते हैं आप, और ऐसा लेखक भी नहीं होता है जिसके पास लेखक के अलावा कोई और सत्ता हो, कोई और पावर हो, कोई पोस्ट हो, पोजीशन हो। तो जो पूरी तरह से लेखक है वो पूरी तरह से वल्नरेबल है, और अगर वह लिखता है तो उससे सब नाराज़ रहते हैं, उससे ईश्वर नाराज़ नहीं रहता। क्योंकि एक वो अरबी कविता की पंक्ति है ना कि जब पृथ्वी पर मरता है कोई कवि तो सबसे पहले छलकती है ईश्वर की आँख। तो ईश्वर के लिए तो शायद वो पवित्र होता है, निर्दोष होता है, लेकिन जो सत्ताएं हैं, जिनके कुछ नियम हैं, उनके लिए वह शायद कई तो अपराधी होता है। इसलिए ज़्यादातर आप लेखकों को पाएंगे कि वो निष्कासित होते हैं, दंडित होते हैं। और मुझे लगता है नमिता जी की मेलंकोली जो है, अवसाद, ये लेखक के स्वभाव में होता है। वो बहुत खुश रहने वाला प्राणी नहीं है। जैसे मैं पढ़ रहा था वो जो मिलोराद पाविच का उपन्यास है, लैंडस्केप पेंटेड विद टी, तो उसमें उसने एक बहुत अच्छी बात लेखक के बारे में कही है कि लेखक को सिर्फ अपने ही हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है, किसी दूसरे के हाथ का नहीं। और अगर वो किसी बार रेस्टोरेंट में जाता है तो सबसे कोने की जगह चुनता है जहाँ वो कोने में बैठ सके। तो दिखना नहीं चाहता है बहुत, वो लगभग अदृश्य रहता हुआ, जैसे कहता है ना कि रमबात ने कहा कि जो ऑथर है वो प्रॉफिट है, इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू प्रॉफिट। प्रॉफिट दिखता नहीं है। तो लेखक को आप कहीं नहीं देखेंगे, वो किसी पुल के नीचे रह रहा होगा, कहीं अपने कमरे में रह रहा होगा, कहीं और रह रहा होगा। तो उसका जीवन तो कई तरह की इस तरह की समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। और मेरा अपना निजी जीवन भी मुझे लगता है कि नमिता जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, और उनका मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ कि वो बचपन में पेरेंट्स को खो देना, फिर जगह जगह संघर्ष करना, फिर आगे बढ़ना, फिर कुछ ऐसा लिख देना, कुछ कविताएं और कहानियाँ जिससे बहुत से लोग नाराज़ हो जाएं। तो वो मैंने काफ़ी देखा है, और निराशा मुझे लगता है पूरे भारतीय समाज में है। हम बहुत उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं जैसा पहले कभी उम्मीद हुआ करती थी 47 के बाद, जिसको कहते थे कि यह नवनिर्माण का युग है। अब वो जितने निर्माण हुए थे अब सब संदेह के घेरे में हैं। तो यही कहना है मेरा। आप ही अंग्रेजी में भी यही कह दीजिए, कह रहे हैं। हाँ, अच्छा। I didn't say much, but it was like this. Her question was the kind of depression and pessimism, and this is in my writing. I said no, it's not that all the time. Like one of my novella, which is a long, very long short story, Pili Chhatri Wali Ladki, which he has beautifully translated, Girl with the Golden Parasol, which was published in Penguin. That is because of Namita ji, and now which is again going to be published in Yale University Press in America. So he is a translator, and he received the Penn Grant Award for that, and he came to India, and he knows a lot about my personal life. So pessimism is something I feel that I was telling that the writer lives in the bottom of the society, and he doesn't have any power. He's absolutely vulnerable and powerless, and everyone else has some power. So that is the reason in Sahitya Academy acceptance speech I said that the writer is almost like a tribe in his own language. Every time he is being displaced. He's a Dalit, who is a low caste, lowest caste,
citizenry. So this is the position of a writer. And yeah, I referred some writer who said that melancholy is the state of mind of a writer. And I also said about Milorad Pavic. He's a wonderful novel. It's a poetic novel. Every sentence has poetry. It's a landscape painted with tea. He tells about a writer. Writer doesn't like a food cooked by someone else. He cooked for himself, and if he goes to a bar, a restaurant, he chooses the most remote corner seat, and he doesn't appear anywhere. He remains almost invisible. And like Roland Barthes has compared prophet with author. So a writer is also kind of an author. And the prophet is always, he's punished. He's crucified. He's dandit. So a writer, if an author, if he writes really truthfully, and if he's really an author, so he's also punished and he's condemned. That's right. Very beautifully put. So my next question is to Jason. Jason, please tell us about the experience of translating Uday Prakash's work. How did you first encounter it? What drew you to these stories? What evolution have you witnessed in their telling? And also the process of translation. And the transition to a Western sensibility. Great, thank you. So the first question, when did I first come to Uday Prakash? I had taken a break from doing literary translation when I was working for the International Red Cross, and had returned to do an MFA in fiction, and was looking for a contemporary Hindi writer with whom I would have some sort of connection and who I wanted to translate, because as many of you may or may not know, literary translation is really a labor of love, and you had better love the author who you translate. Luckily, we've fallen deeply in love, author and translator, I'm happy to report. But in the beginning, it was me in a library and a list of names of authors that various friends had recommended who I read, and I'd heard of Uday Prakash mostly as a poet. And I'll never forget the day that I discovered his short story, Paul Gomra Ka Scooter, Paul Gomra and his motor scooter. And just reading the very first paragraph, something about the tone, the contemporaneity, the humor, the pathos, just everything contained in that first paragraph, and it was absolutely love at first read. So I was able to get in touch with Uday and translate that story. So that was the first thing. So the process of translation, there's a lot of, I think there are a lot of misconceptions out in the world about translation, that somehow it's either faithful or unfaithful, literal or free. I mean, translation is basically writing, but it's writing with the greatest number of constraints possible. And it's a series of choices that one has to make. You're faced with certain translation challenges, and for each little thing you come up with different strategies, and you weigh them and decide which one may or may not be the best one. Of course, translation is the closest reading you can do of a text, but like any reading of a text, the possibilities are limitless. So, of course, there are many joys of translation, but one of the frustrations is the feeling that somehow the work is never done. Somehow there can always be a better solution. Somehow it can always be a better version. The great translator Gregory Rabassa, who translated Garcia Marquez, once told this anecdote that when he reads something that he wrote originally in English, and he reads it later on, he thinks, well, maybe this guy, has something interesting to say. Maybe he has a point. But whenever he reads his own translations, it's an excruciating process because he always feels, my God, I could have done this differently, I could have done that differently. So it's a process of choices. And then finally, I think one of the most interesting questions for me translating Uday's work, I mean, I could talk about this for a long time, but I don't want to take up too much time with this. No, please talk about it for a long time. It's very interesting. One of the questions that more generally comes from translating Hindi literature into English and South Asian languages, Indian languages into English, is the question of audience. And every translator, every writer has to think about audience, but this particular combination of Hindi into English and South Asian languages into English, a second question arises:
who are the English readers, right? I mean, the greatest number of English readers are obviously among all of you wonderful people who are sitting in the room and everybody outside. The greatest number of readers will be on the Indian subcontinent. But of course, when I think about the reader, and who this reader might be, when I think about a reader from India, I can make, certain safe assumptions about the sort of cultural background that the reader might have. In other words, Indian readers and South Asian readers will be more close culturally in some ways to the original text. So the translation strategies that I might choose for that might be very different versus if I'm translating for some guy sitting in the middle of Iowa in the US whose only connection with India is yoga and chai from Starbucks. So that person I want to be my reader just as much as I want all of you to be my readers, but I don't want that person to be left out of the conversation because at the end of the day, translation is about enlarging the conversation of literature. So one of the strategies that I've adopted, and I don't know how successful it is translating with a view of keeping the Western reader, for lack of a better phrase, within the conversation so that they're not lost. So that, for example, in Pili Chatriwali Larki, the girl with the golden parasol, when Raksha Bandhan, there's a reference to Raksha Bandhan, right? And that guy in Iowa is going to have no idea what Raksha Bandhan is. So I have to provide some sort of information. And I think, well, what do I do? Do I have a footnote? No, I don't want to have a footnote because there are no footnotes in the original. People see footnotes and they think academic writing, their eyes start to close, and it's not a novel anymore. It's not fun. Glossaries I don't like because that sort of divides readers into two categories: those who are kind of in the know and those who need to sort of look in the back. So in cases like that, sometimes I'll try to stealthily, ideally, interstice some information within the text itself to give the reader enough information that he or she might need, while hopefully for those who already know what they need to know, it won't seem too pre-chewed, for example. So these are some of the considerations. I think it's very important to recognize that the greatest audience for South Asian literature and translation is in India, is on the subcontinent, but at the same time recognize that voices like Uday's and so many other writers deserve a worldwide audience and deserve an audience in the West and deserve to be heard in other countries, and for that I think a very expansive translation strategy is needed. I'll stop there for now. That was absolutely a very fascinating and a very enlightening look you gave us into the process of literary translation. I think this is a good time to throw open to the audience because I can see many distinguished people here who I'm sure have questions or comments, more questions than comments to make. Please, and Annie, please come to the front row. Would you, who would like to begin with a question? And questions can be in Hindi or English, and English can be answered in Hindi, Hindi can be answered in English. Nandji, बताइए. उदय प्रकाश जी से एक सवाल, आपने एक अच्छा इशू उठाया. आपने कहा कि उदय प्रकाश की कहानियों में निराशा का भाव ज़्यादा है. मुझे लगता है कि निराशा की बजाय उसकी कहानियों में संघर्ष का भाव ज़्यादा है. ये बहुत आपने ठीक कहा. और संघर्ष और कन्फ्लिक्ट एक ख़ास तरह का द्वंद्व उसकी कहानियों में, उसके चरित्रों के बीच में, उन परिस्थितियों के बीच में लगातार रहता है. मेरी जानने की इच्छा उदय प्रकाश जी से ये है कि उन्होंने वर्ल्ड लिटरेचर के बहुत सारे वर्ल्ड क्लासिक्स को भी पढ़ा है. उनसे ज़रा कंपेयर करके और फिर अपनी बात कहें कि क्या इस कन्फ्लिक्ट में, इस संघर्ष में राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग की ज़्यादा संभावनाएं हैं या इससे भिन्न भी दूसरी तरह के जो मानवीय भाव है उनमें इतनी ही बड़ी बात, इतनी ही वर्ल्ड क्लासिक्स की बात को सहेजा जा सकता है? उस पर बात. उदय जी जवाब. अगर मैं इसको आपकी बात को समझ सका हूँ तो, और अगर आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में दे देंगे जवाब. जी. तो ये है कि नंद जी, आपको मैं पढ़ता रहा हूँ, आप स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे रूममेट भी रहे हैं JNU में. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद जो निराशा है और हताशा की जो रचना है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है.
और वही शायद आशा को जगाती है। अभी आप अगर तुरंत का उदाहरण लें तो उससे ज़्यादा उत्पीड़ित कौन रही होगी वो लड़की ज्योति सिंह, जिसका बस में रेप किया गया, गैंग रेप, लेकिन पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है अगर आप खुद ही कहानी में या रचना में वह सब कुछ कर डालना चाहेंगे जो दूसरों को करना चाहिए तो वो ठीक नहीं होगा। और ऐसे हम नतीजे देख चुके हैं कि बहुत ऐसे, जैसे कहते हैं ना, ऑप्टिमिज्म इज मस्ट, नो, ऑप्टिमिज्म इज मस्ट पॉसिबली टू लिव, टू सर्वाइव, बट in writing, I think write something which is really true, and the truth is really very pathetic. तो ये मुझे लगता है, और शायद इसीलिए ज़्यादातर संघर्ष की जो संभावनाएं, कहा जाता है, सच्चिदानंद जी सामने बैठे हैं, कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म इज काइंड ऑफ स्टुपिडिटी। तो वो बहुत आशावादी नहीं रहना चाहिए, और निराशा, मुझे लगता है निराशा है सबके मन में, आपके, हम सबके मन में है कहीं ना कहीं, यही है जी। Mala, can we have the mic here? Hi, this is a question for Jason. You mentioned the significance of the audience. Would you add another category, which is the very large Indian and the South Asian diaspora? Because I hear of a lot of friends who are living abroad saying that, you know, we have forgotten the language, our children don't know it at all, and yet the only bridge to our home country. Now, this is a category which is somewhere between the two positions that you mentioned about familiarity and distance. Thank you very much for that question. That's a very important point. It's absolutely true. There aren't just two audiences. There's a huge continuum. Maybe there's a sort of that guy in Iowa is kind of an extreme example, and somebody who might be able to read the work in the original but chooses to read it in English might be another category, and everybody in between, including people in the diaspora. I mean, I teach Hindi at the University of Chicago, so I also, you know, have among those exact people who you've described. And I think one of the another great benefit of having more good translated literature, there's a wonderful kind of ecosystem involved here, whereby if you have good translations that are published well and publicized and attracting readers. For example, if you think about the kind of wave of Latin American literature in the West in the 1970s, which turned a lot of people on to Latin American writers. So what happens then is people start reading, becoming interested in the original language. So this benefits everybody. This benefits the people of the diaspora, this benefits readers, but then translation, of course, gives a kind of a boost to the authors. It's a kind of validation to them, but then it also gets people interested in the original language. I mean, if somebody reads Dili Ki Diwar or Pili Chati Wali Ladki in English, they think to themselves, well, this is wonderful, but you know, maybe I also want to read the Hindi version as well. So people, you know, then become more interested in the language. Then you have more people learning the language and entering the culture. So I think this, you know, of course, I'm slightly biased, but I think you know, good translations can really create a wonderful knock-on effect for language learning, for learning about culture, for boosting the profiles of authors back in their home countries. It shouldn't be like that. It shouldn't have to be like that. I mean, a writer shouldn't have to be translated into English or German or another language to receive the kind of support and validity that they do. But let's face it, English is the global language, whether one sees it as kind of an invasive species or an opportunity, it's really both. So that's, I think, another importance of literary translation. We have time for one or two more questions. Could we have the mic there? Yeah. Hello. In defense of, at the moment, looking defenseless, Udayji. He is very good at looking defenseless. That's his defense. Yeah, that's his outer defense. I just want to cite or read one line which will, I think, say it all. Yogi hoga pehla kavi, ah se upja hoga gan. You need
a ground reality runway to take off into the grey clouds upwards. God bless you. Thank you. Thank you for that comment. Sumitra, excuse. Absolutely. I want to complete your line, sir. My sweetest song are those that tell the saddest tale. Very nice. Any more questions? There's a question there. Can we have a mic? उदय सर से मैं पूछना चाहूँगा मैं Yes. सर मैं पूछना चाहूँगा कि जो समाज की निराशा है वो सीधे साहित्य में चली आती है और बयां होती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि साहित्य में वो निराशा आती है और क्या उसमें आशा का स्वर दबा हुआ होना चाहिए या पाठकों पे छोड़ देना चाहिए कि उस निराशा से वो अपनी आशा को ढूंढ ले। Very nice. Jason, could you translate the question? If you could. हाँ, आप ही translate कर दीजिए. नहीं प्लीज ट्रांसलेट। अच्छा, अब इतनी तकल्लुफ में. So, why don't you give us the question in English also? See, he asked a very lovely question. He said that do we leave it to the audience if the writer expresses his despair? It's a very difficult Is it question. important for the writer below his despair? Is it part of his literary duty to keep a subcurrent of hope there? Or can we leave it to the writer, to the reader, to deconstruct that positive element out of it? आपका जवाब? नहीं, I tell you, ये मुझे लगता है बहुत ही कठिन प्रश्न है, बहुत ही कठिन प्रश्न है। और अभी तक इसके बारे में मेरे पास बहुत स्पष्ट उत्तर सचमुच नहीं है, क्योंकि लिखते हुए ये पता ही नहीं चलता कि इसमें आशा होनी चाहिए या निराशा होनी चाहिए या किसमें अंत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोहनदास को भी अगर आप पढ़ेंगे, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया है, सारी भाषाओं में है वो भारत की, उसमें भी आशा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये लोग समझते हैं कि किन वजहों से वो निराशा पैदा हो रही है या हुई है, तो लोग जान जाते हैं। और मुझे लगता है कि वो अंततः कॉन्सिक्वेंटली वो आशा का ही और कुछ करने का भाव पैदा करता है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है अगर आप मैंने कहा भी था नंद जी के प्रश्न के उत्तर में कि अगर आप सब कुछ हम अगर सोचें कि हम फ्लैग बेयरर हैं या अवागार्ड्स हैं, जैसा बहुत से लोग मानते रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। वो कुछ समय तक तो जो कोई मूवमेंट्स चल रहे हों तब तो उनका कोई असर होता होगा, बाद में फिर गायब हो जाते हैं। तो मैं पढ़ रहा था कहीं पर एक आर्टिकल, तो उसमें कहा गया था कि जो मैकवस्की थे, तो जब तक शुरुआती दौर था रूस में क्रांति के बाद का, तो स्कूलों के लाइब्रेरियन को फोर्स किया जाता था कि आप मैकवस्की की 5 कविताएं बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। अब आज सोचिए कि क्या कोई स्कूल ऐसा फोर्स करेगा कि किसी क्रांतिकारी की 5 कविताएं ज़रूर पढ़ाइए। तो मुझे लगता है ये लोग स्वयं चुनते हैं। कहते हैं ना कि जैसे समय ऑथर को चुनता है, लेखक को चुनता है, वैसे ही लोग चुनते हैं अपने लेखक को। तो ऐसा मुझे लगता है। जी, वेरी ब्यूटीफुली पुट। अंग्रेजी में भी ज़रा यही बात थोड़ा बता दीजिए। हाँ, आप कर दीजिए। मुझे मेरी अंग्रेजी बहुत खराब नहीं, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। The answer is I really don't know where I should end. Should it be optimistic or should it be pessimistic? And answer is a very difficult question, and I really don't know when I am writing it. But I personally feel that if you end it with the pessimism, or if you write truthfully, so people come to know what are the reasons, why this pessimism has developed. So this is what I have said. And this is like, Arundhati Roy, someone has said, Arundhati Roy said that is a time chooses an author. So it's not the author who chooses time to write, but it's the time which chooses an author. So the same way I feel these are the people who choose their authors and not the author, that way. That's very beautifully put. I want to check how much more time do we have? 5 minutes? Time for one more question. Yes, please. सर, मैं जब आपकी कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि आप हमेशा किसी के साथ खड़े हैं और किसी के अगेंस्ट लिख रहे हैं, और मतलब एक आपका पक्ष हमेशा आपकी कहानियों में रहता है। और अभी जब मैं नई हिंदी कहानियाँ पढ़ रहा हूँ तो उसमें एक अलग तरह का अलगाव है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक जब राइटर जब लिखता है तो उसमें कितनी सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, और आपका उसके बारे में क्या ख्याल?
if I could translate that question, because it's a lovely session because the questions are so deep and intelligent. And his question is that when you write, it's very clear on whose side you are in the story. Your lines are drawn. And how important is it, if I have a question, to draw these lines with your characters, of your likes, dislikes, of your... तो आप बताइए। हाँ, ये देखिए, ये हमेशा होता है। आप जीते भी हैं, जीवित भी रहते हैं, तब भी होता है कि किसके पक्ष में जी रहे हैं, किसके विपक्ष में जी रहे हैं। पड़ोसी के साथ पड़ोसी के पक्ष में है, पड़ोसी के विपक्ष में है। जिस समुदाय, जिस संप्रदाय, जिस जाति के आप हिस्से हैं, उसके पक्ष में है, उसके विपक्ष में है। जो व्यवस्था है आपकी, उसके पक्ष में है, विपक्ष में। ये इटर्नल क्वेश्चन है। और बल्कि मैं फिर से कोट करूँगा, एक मेरे बड़े प्रिय लेखक हैं इटालो कैल्विनो, उन्होंने लिखा था कि बाइबल जो है, बाइबल आप पढ़ते हैं तो बाइबल सिर्फ जो आस्थावादी लोग हैं, एंजेलिक नो, उनको ही संदेश नहीं देता है, डेविल भी उनसे संदेश लेता है। तो दोनों उसमें अपना संदेश लेते हैं। तो यही मेरा कहना है कि लिखते हुए लिखने के प्रति, लिखने के बारे में बहुत ट्रूथफुल रहना चाहिए, और किसके पक्ष में लिख रहे हैं, किसके विपक्ष में लिख रहे हैं, उसके बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए। This is what I feel. Time for one more question? Is there? Or are we closing now? One more last question? Okay, just one question we can take. Come on, young lady. You had a question too? Okay. My question to Jason. Well, you mentioned a translator may feel I may have done the writing in that way or in some other way, or translation skills. How much satisfied are you with your work? I guess it probably depends on what day you ask me. Well, I don't feel quite the same as Gregory Rabassa does, in that each and every sentence is tortuous. You know, sometimes I'll reread a translation of mine, and every once in a while I'll give myself a little pat on the back. But I do feel the same way often. I say, maybe I could have had a better decision here, a better choice there. I mean, it's always, you know, translation makes you realize how open texts are, and how many different interpretations there can be, and how slippery meaning can be. I mean, if you just read something, you know, you feel like you get the meaning, but if you try to translate anything, even if it's a McDonald's menu, you realize that there's a process of kind of radical recontextualization that needs to be done. That's you know, very, very difficult work. So it can be a very satisfying process. I mean, the most satisfying thing, I think, is working with such amazing writers and authors, and getting to wear another author's skin, I think, is another lovely sort of byproduct of being a translator. You get to sort of try on being a different writer for a little while and see how that feels. And you know, so far it's been a lovely session of trying. I'll skip the shopping and clothes metaphor for now, but anyway, trying on the clothes of Uday. There was a last question here. That's it? Okay, you can ask the question outside. Yeah, because, so this was an absolutely delightful session, and thank you to the audience, and thank you, Jason, thank you, Uday, all being here. Thank you, Jason. Thank you, Namita, and thank you, Uday, for this lovely session on the importance of translation and the uselessness of optimism. So we have small gifts for you from our sponsors and our